This is the first time in history that a bench of 13 judges sits for hearing, the largest in the Supreme Court's history. Yes, you heard it right. Today we are talking about a historic decision where the question arose, is there a limitation on Parliament's power to amend a constitution? Was the Supreme Court correct in revising its earlier decision in Golaknath case? वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1973 के एक ऐतिहासिक निर्णय की जिसने आम जन तक अपनी पहुंच बनाई, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती ने केरल के भूमि सुधार कानून को चुनौती दी। वो एक मठ के मठाधीश थे और जो संस्थान के संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाते थे, जो कानून उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि केरल भूमि सुधार अधिनियम ने अनुच्छेद 14, 19, 25 और 26 के अंतर्गत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। केशवानंद भारती challenged the Kerala government's land reform laws, which placed restrictions on the management of his institution's property. He filed a petition under Article 32 of the Indian Constitution, arguing that the Kerala Land Reforms Act violated his fundamental right under Article 14, 19, 25 and 26. The verdict was decided by 7-6 majority. The court held that while Parliament has the power to amend the Constitution, this power does not extend to destroying its basic structure. The court did not explicitly define the basic structure but provided basic structure doctrine. The basic structure was introduced ensuring that certain essential features of the Constitution like democracy, secularism, federalism, judicial review. जो लीगल प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया गया वो ये था कि द रूलिंग ओवररूल्ड गोलकनाथ to the extent that it allowed amendments to fundamental right but imposed limitations on Parliament's power. The Supreme Court reasoned that unrestricted amended power could destroy democratic nature of the Constitution. न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं है बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है और इसलिए इसके मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।